Okay, so we need to prove question 7. And for that, we will take again in a way A is equal to AXI plus AYJ plus AZK. This will in fact not will be only the equality proof, but the method to determine the scalar triple product. And C is CXI plus CYJ plus CZK. So first we determine A cross B. I'm doing this third case. You can try anyone. So that will be I, J, K, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. So as we discussed in last class that we need to do like this. So it will be A cross B is equal to I, AY, BZ minus AZ, BX माइनस सेकंड जे के साथ देन आप इसको सेंटर वाले को क्रॉस करेंगे यू विल हैव ए एक्स बी जी माइनस ए जी बी एक्स एंड द लास्ट वन इज के जिसके लिए आप इसको करेंगे यू विल डू लाइक दिस। तो ये आपका जो ब्लॉक है ये बेसिकली 2/2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। सो दैट विल बी ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब आपने क्या करना है इसको सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। सो जस्ट टेक अ डॉट प्रोडक्ट विद सी, सी डॉट ए क्रॉस बी। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ एंड ऑल अदर आर इक्वल टू 0। सो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इट विल बी आई डॉट आई, दिस आई will merge with this I and you will get CX AY BZ minus CX AZ BX। फिर ये वाला J इस J के साथ, सो माइनस मैं इसे नेक्स्ट पे लिख लेता हूँ CY AX BZ माइनस CX AZ BX प्लस K वाला K के साथ जो सिंपल CZ AX BY minus CZ AYBX। So this is basically that scalar triple product equal to अब इसको अगर आप क्लोज करें यानी इसको अगर आप सेपरेट सोल्व करें और चेक करें या इसको आप इस तरह लिख लें तो इसमें देखें क्या आ रहा है आपके पास कॉमन आ रहा है आपके पास। अगर मैं इसको इस पर लिखूं सी एक्स सी वाई सी जी तो ये आपके पास सी एक्स है इसमें कॉमन, इसमें सी वाई है और इसमें सी जी है और उसको आप डिटर्मिनेंट देखें तो ये इसके इक्वल आएगा। सो ये जो मैंने स्टार्ट में कहा कि इट विल नॉट बी जस्ट सिंपली अ प्रूफ ऑफ 3 आइडेंटिटीज, या आप बाकी तो खुद चेक करेंगे कि ये इसी के बराबर आता है। द मेन थिंग वाज वी नीड टू फिगर आउट कि ये बराबर किसके है। सो ये किसके बराबर है? ये सिंपल डिटर्मिनेंट के बराबर है ऑफ 3/2। यानी मैं अगर लिखूं अगर मेरे पास ए क्रॉस बी है
तो पहले यूनिट वेक्टर्स, फिर उनके कंपोनेंट्स, एंड दैट्स इट। लेकिन अगर आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल सी आ जाता है, तो फर्स्ट रो पे आपका सी के कंपोनेंट आ जाएंगे, फिर आपके ए के कंपोनेंट आ जाएंगे, और फिर आपके बी के कंपोनेंट आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट। सो होपफुली यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए आपको वेक्टर्स दिए जाएं, तो यू जस्ट नीड टू सॉल्व अ 3 by 3 डिटर्मिनेंट विदाउट एनी आईजे के, और आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे आपका वेक्टर आएगा, बिकॉज यू विल हैव डायरेक्शंस, और यहाँ से आपके पास स्केलर आएगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव यू अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई we term it as scalar triple product. So this I did the last part. You can try the first two parts, and this is how you can do question 7, which is simply mathematical thing, nothing conceptual in this. Or and this is a good comparison, and this is a good MCQs. Scalar triple product of any three vectors is equal to a scalar, but vector product of two vectors is a vector. अब यहाँ पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि सर हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा, हमने स्केलर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा, तो क्या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है कि यहाँ पे डॉट की जगह क्रॉस आ जाए? तो यस, एंड दैट वाज व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस क्लास, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जिसमें आप दो वेक्टर्स के क्रॉस को फिर तीसरे के साथ क्रॉस करेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या था, इफ यू रिमेम्बर, इज 132 माइनस 123. So this is what we proved in the previous class. This is what we did in today's class. So just again a good comparison of how the things are going along. Okay, on the same manner we have question 10. I'm on page 4. So question 10 में आपने प्रूव करना है कि अगर आप दो वेक्टर प्रोडक्ट का डॉट लें, if you have two cross products and then you take a mutual dot product of those two cross products, then you will end up with some this sort of result, which is basically first into second, second into fourth, then there is a minus by a formula, and then there will be cross multiplication, first with the fourth and the second with the third. And similarly you can go for the either side. If you take two vectors cross product and then do another cross product, so it will be like first as it is, and the second and third cross product with the second as it is, and so on and so forth. So you need to prove these sorts of results, और उसके लिए उसी तरह आपने ए बी सी डी लेने हैं। सो वी टेक द ए पार्ट, और ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ली। फॉर द सिंप्लिसिटी of just one step, he take this a cross b is equal to f, just for the one step to make it a bit simpler, and then multiplied with as per the previous routine. So this is scalar triple product, f dot c cross t is simply scalar triple product, and it can be simplified accordingly. You can interchange their cross and dots as per the previous example.
इससे जो पहले हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन 6, सॉरी क्वेश्चन 7, इट सेज कि आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं डॉट्स को क्रॉस को, यही वो क्वेश्चन था बेसिकली। सो लिहाजा यही वो इंटरचेंज यहाँ पे हुआ, और फिर उसने उसकी वैल्यू वापस प्लग इन कर दी, विच वाज ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड क्रॉस डी। अब ये क्या आ गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हम कर चुके हैं अगेन, जो कि क्वेश्चन 9 बनता है, दैट इज बेसिकली 1 into 3 2 minus this thing multiply by this thing। सो जो क्वेश्चन 10 में आइडेंटिटी है 132 minus 123, वो यहाँ पे लगाई गई है, इसमें ज़ाहिर ये इस साइड पे है, सो लिहाजा उस लिहाज से इंटरचेंज आ जाएगी। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो दैट विल बी ए डॉट सी बी डॉट डी, इट्स अ डॉट सॉरी, माइनस बी डॉट सी a dot d। So this is how it can be simply done. So this is being done. So I just help it its case। तो ये आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी, जो कि आपकी क्वेश्चन 10 का पार्ट ए कंप्लीट कर देंगे। तो जस्ट आपने दो आइडेंटिटीज लगानी जो हमने पहले इस्तेमाल की हैं, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली आइडेंटिटी और एक फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली, और लगा के सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वही चीज बन जाएगी जो कि आपको राइट हैंड साइड पे डिमांड की गई है। जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, वो आप यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली आप इसका क्वेश्चन 10 का बी पार्ट ट्राई कर सकते हैं। सो काइंडली ट्राई इट एट योर ओन, कंप्लीट योर सेल्फ, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। जस्ट लेट मी हाईलाइट इट। So this is question 10B part. No box, nobody. So this is question 10B part. Okay, let's move ahead. Okay, going back to question 6, which is simply the application of vector product, and it is dark. So I am on page 5. So question 6 dark basically आपको हमने एग्जांपल में पढ़ा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट। सो वेक्टर प्रोडक्ट के मुताबिक इसकी डेफिनेशन बनेगी टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। बेसिकली ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये प्रूव नहीं है, इसमें जस्ट आप थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं टार की। सो इसमें एमसीक्यूज के बिहाफ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। सो डायरेक्शन किस तरह मालूम करेंगे हम इसकी, आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। सो डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, सिंपली बाय राइट हैंड रूल, बिकॉज इट्स अ वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं, तो जहां भी वेक्टर प्रोडक्ट यूज होगा वहां पे राइट हैंड रूल यूज किया जाएगा उसके प्रोडक्ट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए। देन ही टॉक्ड अबाउट द जस्ट सिंपली मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, यूनिट वेक्टर नहीं आएगा। सो टी इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड। मैक्सिमम कब होगा टार्क, जब थीटा 90 डिग्री होगा। मिनिमम कब होगा टार्क, जब थीटा 0 डिग्री होगा। इसके अलावा भी केसेस हैं मिनिमम टार्क करने के लिए। एक तो 0 डिग्री है कि आपका आर और एफ के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका आर ही 0 हो जाए। अब आर 0 होने से मुराद है कि आपका मोमेंट आर्म 0 है, और मोमेंट आर्म 0 होने से मुराद है कि आप एक दरवाजे को खोलना चाहते हैं और आप उसको हिंज वाली जगह पे फोर्स लगा रहे हैं। हम दरवाजा खोलते हैं उसके हैंडल वाली जगह से। सो इफ दिस इज अ डोर, दिस इज अ हिंज,
and this is basically the knob. तो आप हमेशा डोर यहाँ से ओपन करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाएं तो यहाँ पे फोर्स और जो उसका पीवट है उसके दरमियान फासला 0 होगा. सो इन दैट केस टार्क इज ऑल्सो 0, देयर विल बी नो रोटेशनल फोर्स इन द डोर. और जितना फासला इसका हिंज से ज्यादा होगा विच इज एफ, उतना आपका रोटेशनल फोर्स मतलब टार्क ज्यादा होगा. सो दिस इज अ बिट ऑफ डिस्कशन ऑन when we can have torque equal to 0. So two possibilities, one in which the angle between the R and F is 0, and the second one is in which we have moment arm to be equal to 0. Then there is a comparison between torque and force. As I just told, the torque is basically the rotational force or rotational effect of force. So all the definition which applies on force, for example, F is equal to ma, it will apply on torque, that is I alpha. We will study it in circular motion chapter, that m is mass, its analogous is moment of inertia, I is acceleration, alpha is angular acceleration. So whenever F is 0, it means acceleration is 0. And whenever the tau is 0, it means angular acceleration is 0. And it will represent an inertial frame of reference. We have to know about inertial frame, those frame of reference in which acceleration is 0, Newton's first law applies. So this is for a circular motion and this is for a translational motion. So this sort of stuff we discussed here. And as I told, this is not as important as other questions which we previously did, as there is no proof type thing, there is only discussion, and that can be part of an MCQs. Okay, let's move to question next page, page 6. I am on page 6 now, and we will have a quick look over question 12 and 13. Question 12 is basically definition of velocity, and question 13 is basically the definition of acceleration. And you will be amazed to hear that this acceleration is part of CSS 2021 paper, as it is in the statement of MBD, define acceleration and find its Cartesian components. And question 12 is define velocity and find its Cartesian components. So we know the definition of velocity, the rate of change of displacement is called velocity, which you can write as dr over dt, v average. और इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो आपको लिमिट 0 के इक्वल लेनी पड़ेगी. सो हमें बेसिकली कार्टेशियन कंपोनेंट चाहिए. तो आर क्या होता है आपके पास, एक्स आई प्लस वाई जे. अगर हम एक एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात करें कि एक ऑब्जेक्ट की मोशन जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ गया, तो इसको भी आप विद रिस्पेक्ट टू रीजन देख लें. सॉरी, इट वुड बी बेटर कि मैं से, और एक ये है और ये इनका दरमियानी फासला, जिसको आप एक कर्व भी बना सकते हैं अगर ये सर्कुलर पाथ है. सो यहाँ पे आप एंगल्स देख सकते हैं. दिस इज इनिशियल थीटा and this is change in theta delta theta. Then you have speeds, this is basically your r, this is delta r, so that will be r plus delta r. So the coordinates of this xi plus yj, so you simply separate it. So this will be vxi
This is Vyj. This is a simply definition of horizontal velocity and vertical velocity. So these are the Cartesian components for velocity. Next, you need to find the Cartesian component for acceleration. For the same diagram, now you will have initial velocity here, change in velocity here, and sum of the velocities here. The same diagram will be applied here, and A will be equal to dv over dt. The rate of change of velocity is called acceleration, and v is equal to dr over dt, as we just discussed. तो इसमें आप कंपोनेंट दर्ज कर दें. So it will be d square r over dt square. So in order to find the Cartesian component of acceleration, you need to insert the values of r, which is xi plus yj. So by simply solving, you will get axi plus ayj as Cartesian components of acceleration. And as I told, this is part of question CSS 2021. Couple of years back, it was 5 marks question. Define acceleration and write acceleration in Cartesian components. So though its question seems a bit simpler one, but it is part of your exam and it's worth marks, and that's what it is most important. So this concludes our lecture for today. We have done few things. Just let me quickly wrap it up. So first, we started from page 1. Kindly go to the page 1. फिर we did question 7, which is scalar triple product. कि अगर आप दो वेक्टर्स का जो सोल्यूशन है उसको डॉट प्रोडक्ट लें तीसरे वेक्टर के साथ तो क्या आता है. तो बेसिकली हमने ये रिजल्ट निकाला कि आपने उसका 3x3 मैट्रिक्स लेना है जिसमें ए फर्स्ट रो में आ जाएगा, बी सेकंड रो में आ जाएगा और सी थर्ड रो में आ जाएगा, और वो आपका सोल्यूशन होगा. उसको फिर पेज 2 पे हमने कंपेयर किया एक वेक्टर प्रोडक्ट के साथ कि वेक्टर प्रोडक्ट वर्सेस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है. कि वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास यूनिट वेक्टर्स आते हैं पहली रो में, तो वो एक वेक्टर है, जबकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जो भी वेक्टर पहली पोजीशन पे होगा और जो बाकी होंगे वो नीचे आ जाएंगे. और क्योंकि इसमें आई जे के नहीं है, सो ये स्केलर आएगा. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज एज वेल. देन वी मूव टू पेज 3 और हमने उसी को कंपेयर किया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ, जो कि हमने क्वेश्चन 9 में लास्ट टाइम पढ़ा. और मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट टाइम जो पीएमएस आया है उसमें रिपीट है 2023 में. तो वो जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो बेसिकली आपका इस तरह लिखा जाएगा, जिसको हमने फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 132 माइनस 123 के लिहाज से एक ट्रिक सीखी, जिससे आपके अगर ओरिएंटेशन कोई भी बदल जाए तो आप उसे इजीली कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंक्लूड हुआ. फिर हम पेज 4 पे मूव किया. पेज 4 पे क्वेश्चन 10 है, जो कि अगेन प्रूव है आइडेंटिटीज का, और इस दफा आइडेंटिटी है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और दो वेक्टर्स के क्रॉस का फिर क्रॉस प्रोडक्ट. सो जिसमें हमने देखा कि उसको किस तरह लिख सकते हैं. और अगेन यू माइट नॉट नीड टू रिमेंबर इट, क्योंकि पेपर में एज अ प्रूव आएगा. सो जब प्रूव आएगा तो यू कैन सिंपली लुक एट इट एंड प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देन वी मूव टू पेज 5 वेयर वी डिड क्वेश्चन 6 स्टार्ट, जो कि हमारा पीछे से स्किप था, फ्लो में नहीं आ रहा था. तो उसको फिर हमने देखा तो वो सिर्फ डेफिनेशन है टार्क की, जिसमें डायरेक्शन का जिक्र है, मैग्नीट्यूड का जिक्र है, कुछ उसका रिलेशन है ट्रांसलेशनल फोर्स के साथ. और दैट कंक्लूड एंड दैट टेक अस टू पेज 6. उस पे हमने क्वेश्चन 12 और 13 देखा. though which seems to be a simpler one, just define physical quantity, velocity and acceleration and write in the Cartesian component, but keeping it in mind that acceleration is part of CSS 2021 paper, you should take it seriously. So just you need to make a diagram on which you represent what you are doing. उसके बेस पे आप उसे सिंपली डेरिवेटिव लेंगे पोजीशन का, तो आपके पास वेलोसिटी के कंपोनेंट आ जाएंगे. वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे तो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट आ जाएंगे. And that basically concludes our lecture for today.